हेलो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग चैनल में आपको वेलकम। आज डिस्कस करने जा रहा हूँ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का डेफिनेशन, कौन सा मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब का आकार क्या है, कैसे मॉडल वर्ब को यूज़ करेंगे। मॉडल वर्ब कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, ought to, need, be to, have to, would, shall, used to, etc. वर्ड को मॉडल वर्ब बोलते हैं। लेकिन इसको डेफिनेशन करेंगे तो ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी से one used to say that it is possible to do something or for something to happen. Example, I can run. Can you call back tomorrow? He could not answer the questions. Stadium can be emptied in 4 minutes. I cannot promise anything, but I shall do what I can. Collin Dictionary says in grammar, a modal or a modal auxiliary is a word such as can or would, which is used with a main verb to express ideas such as possibilities, intentions, or necessary. Definitions: according to Cambridge Dictionary, a verb used to another verb to express an idea such as possibility that is not expressed by main verb. Modal verb in English are can, could, may, must, ought, shall, should, will, and would. Definitions of Merriam-Webster: a verb such as can, could, shall, should, ought to, will, or would that is usually used with another verb to express ideas such as possibility, necessity, and permission. Next, modal verb can, should, may, might, have to, need not, शैल, शुड कैसे यूज़ हो रहा है उसको एग्जाम्पल को हम लोग व्याख्या करेंगे। जैसे कैन्स एबिलिटी, सजेशन, रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। आई कैन फाइंड एनी स्ट्रीट इन कोलकाता, इसको कैन को एबिलिटी के रूप से कैन को यूज़ हो रहा है। यू कैन ट्रेक अ कार, इसको सजेशन के लिए यूज़ हो रहा है। रिक्वेस्ट के लिए कैन यू टेक मी टू विक्टोरिया मेमोरियल्स, ये रिक्वेस्ट के लिए कैन को यूज़ कर रहा है। लेकिन शुड, यू शुड रीड केयरफुली, ओपिनियन और एडवाइस के लिए यूज़ कर रहा है। मे पॉसिबिलिटी और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है और कोई टाइम में परमिशन हिसाब रूप से यूज़ होता है। इट मे बी क्विकर टू ट्रैवल्स बाय प्लेन। मे आई कम इन, ये भी रिक्वेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है। मस्ट ऑब्लिगेशन सर्टेनिटी के लिए यूज़ होता है। यू मस्ट बी बैक एट 12 o'clock, मस्ट बी 12 o'clock। देखो ऑब्लिगेशन के लिए भी, सर्टेनिटी के लिए लुक्ड एट द आउटसाइड कोल्ड, इट मस्ट बी रेन। हैव टू ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है। यू हैव टू बी बैक एट 8 o'clock। नीड टू, यू नीड टू टेक रेस्ट मोड, ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ हो। सेल को यूज़ कर सकते हैं सजेशन, ऑफरिंग, वॉलंटियरिंग, इंस्ट्रक्शन, प्रोमिसेस, कन्फर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे सेल आई गेट गोल्ड फॉर मैरिज,
देखो सेल को आज सजेशन के लिए यूज़ हो रहा है, सेल को ऑफर वॉलंटियरिंग के लिए यूज़ हो रहा है। दैट बैग लुक्ड हैवी, सेल आई कैरी इट फॉर यू। इंस्ट्रक्शन के लिए व्हाट सेल आई डू विथ योर लेटर व्हेन इट अराइव्स। सेल प्रोमिसेस के लिए यू सेल्फी, I shall meet you at 8 p.m. will को future request offer willingness a refusal कंडीशन के लिए यूज़ होता है। जैसे आई shall be 20 इन मई में 20 होगा। देखो ए फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा है। विल यू कैन मी कॉल मी व्हेन यू गेट होम, देखो रिक्वेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है। विल यू हेल्प मी विथ माई ड्यूटी, ऑफरिंग और विलिंगनेस के लिए आई विल गिव यू, मतलब ऑफर के लिए यूज़ हो रहा है। आई विल गिव यू अ राइट होम। रिफ्यूजल के लिए शी विल नॉट रिटर्न हिज गिफ्ट, विल रिफ्यूजल के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन के लिए विल यूज़ होता है। इफ इट रेन्स आई विल नॉट रिटर्न एन अम्ब्रेला। If Rams, if Rams win the games, he will be happy. ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद हमारा मॉडल का कैसे यूज़ होता है, हमारा जो कंफ्यूज है मॉडल का ऊपर, वो वो डाउट आपको क्लियर होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और भी वीडियो मैं देते रहूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।